Hello, my lovelies. Welcome back to my channel. I am Sana Parveen, and today I am going to be doing a tutorial on this beautiful classic winged eyeliner and red lips. And this look is going to be really simple, trust me, because I haven't used any concealer or any corrector, just foundation and this. And ये बिल्कुल you can say कि everyday काइंड ऑफ मेकअप लुक एंड ऑल में होता है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सना आप एवरीडे लुक्स वगैरह नहीं करते हो, तो आई डिसाइडेड कि ओके चलो एक सीरीज ही मैं प्रॉपर बना देती हूँ सो दैट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो अगर आपको एवरीडे मेकअप वगैरह करना है तो। फर्स्ट आई एम यूजिंग अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड मैंने ये प्राइमर लैक्मे का यूज़ किया है एंड देन आई विल यूज़ माय फाउंडेशन फ्रॉम लॉरियल। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन एंड दिस वन इज़ कम्प्लीटली मैट। इसको आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है बिकॉज इट ड्राइज सो क्विकली। And after that I will use Pond's BB powder, and sadly it is not available in India, but if you can get your hands on this somehow, then I will highly recommend this one. This one is gorgeous, beautiful, and I will quickly set my face with that powder. For eyeshadow, I will be using this beautiful Glitter Galaxy eyeshadow palette. This is, I think, the Fusion one. Yes, it is the Fusion one. And सबसे पहले मैंने एकदम बिल्कुल burnt orange shade लिया है and crease पर लगाया. Eyeshadow look ना extremely simple होने वाला. You really don't need to worry about it. उसके बाद एक dark brown color लेना है and उसके बाद उसको थोड़ा सा outer corner में लगाना है. And then you have to take almost white shade. Everything is in the same palette only, okay? तो ये लगाना है और लगाने के बाद इसको अच्छे से सीमलेसली प्रॉपर ब्लेंड कर लेना है लाइक यू हैव सीन इट। एंड देन बस एक विंग्ड आईलाइनर लगा लेना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग, आई गेस दिस इज द के ब्यूटी वन, आई एम नॉट रियली श्योर, आई थिंक या इट इज द के ब्यूटी वन। so I will link this one as well in the bottom box below. So अगर तुम लोगों को खरीदना है then obviously check that out and use that link. विंग्ड आईलाइनर लगाने के बाद आपको क्या करना है कि लोअर लैश लाइन में आपको स्लाइट एकदम बिल्कुल हल्का सा आई शैडो लेना है, ब्लैक या ब्राउन कलर का। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हो देन दैट वुड बी परफेक्ट। और इनर थर्ड मतलब जो एरिया जो होता है उसमें आपको लगा करके अच्छे से ब्लेंड करना है एंड देन टेक अ लाइटर कलर एंड देन जो आपका जो इनर वाला जो पार्ट है उसमें लगाना है। देन आई एम यूजिंग अ मस्कारा, दिस इज ऑब्वियसली द Maybelline वन, माय एब्सोल्यूट फेवरेट। हालाँकि ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई फॉल्स आईलैशेस आफ्टर दिस, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट मस्कारा से क्या होता है ना कि थोड़ा मतलब आपका जो आईज होता है वो ओपन अप हो जाता है, फॉल आउट वगैरह जो होते हैं आई शैडो के वो सब भी जो होते हैं वो हट जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिड अ स्लाइट मिस्टेक, मैंने यहाँ पे ब्लश वाला जो पार्ट है वो शूट ही करना मैं भूल गई। बट आई हैव यूज्ड एलए गर्ल ब्लश एंड मैंने यहाँ पे कोई कॉन्टूरिंग वगैरह नहीं की है। नाउ आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर on the top points of my face, my cheekbones, my bridge of the nose, my cupid's bow, my chin, and a little bit on the forehead. I've used Becca Moonstone, but अगर आप वो नहीं use करना चाहते then you can totally go for Maybelline Master Chrome. You can go for Wettle Wild as well. This one is amazing. And now I am outlining the outer corners of my lips क्योंकि मुझे lips के shape को भी थोड़ा सा correct करना था। उसके अलावा मुझे बहुत ही precise application चाहिए थी। And then I'm applying red lipstick, and this one is from MAC, the retro matte one. I cannot really recall the exact shade name. I will link it down below. तो वो आप लोग check कर लेना if you're interested. And yeah, and my whole look is almost finished. I'll do my eyebrows off camera and I will apply some false eyelashes and I will be done. And here I'm using little bit of concealer under my eyebrows. This is a very small step, but obviously it makes a huge difference in your eyebrows and बहुत ही ज़्यादा finishing लगती है आपके eyebrows में.
My under eyes creases so bad. That's why I'm applying a little bit of translucent powder on in the under eyes, and I'm blending that nicely so that मेरा जो under eyes है वो बहुत ही अच्छे से stay करे. Foundation को मैंने बहुत ज़्यादा set नहीं किया था, हल्का सा ही set किया था because obviously this is a matte foundation तो बहुत ज़्यादा requirement पड़ती नहीं है. I will quickly do my eyebrows off camera and I will apply false eyelashes, and yeah, that's pretty much it. I am done. I hope that you guys love this tutorial, and ये तो बहुत 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 ही ज़्यादा simple look है, and I will see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.